अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल गफूर छच्छर टीचिंग एंड लर्निंग सां गॾोगॾु। दोस्तों, जीअं त मां पोएं लेसन में अर्ज़ु कयो हुयो त ॿोली जा मैनर्स, ॻाल्हाइण जा आदाब जेके कंहिं बि ॿोली जे लाइ तमामु घणा ज़रूरी हूंदा आहिनि। मूंखे वॾी ख़ुशी आहे त तमामु दोस्त सुठा जेके आहिनि उहे सब्सक्राइब कनि पिया ऐं इन खे लेसन्स खे वॉच कनि पिया, पर इहे तेसि ताईं यूज़लेस आहिनि जेसि ताईं तव्हां हिननि खां कंप्लीट फ़ाइदो न वठो ऐं कंप्लीट तव्हां उनखे अंडरस्टैंड न कयो। अॼु हिन लेसन में मां कुझु तमामु इम्पॉर्टेंट ॻाल्हियूं तव्हां सां डिस्कस कंदुसि ऐं हिन लेसन जे बारे में बि डिस्कस कंदुसि। ॿोली सिखणु एॾो मुश्किल कमु न आहे, पर ॿोली खे ॻाल्हाइण ऐं उन जा तरीक़ेकार सम्झणु उहे ॾाढा मुश्किल हूंदा आहिनि ऐं उहे ज़रूरी हूंदा आहिनि। असां ॻाल्हायूं था, सम्झूं था, मैसेज डिलीवर कयूं था, पर छा इहो काफ़ी आहे? न। असां ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ शोबनि में कमु करियूं था, असां ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां मिलूं था ऐं उहे मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म ते कमु कनि था। कुझु असांजा क्लोज़ दोस्त आहिनि जिन सां असांजो ॻाल्हाइण जो तरीक़ो मुख़्तलिफ़ हूंदो आहे। कुझु असांजा दोस्त न आहिनि, पर हुननि जो असां सां वास्तो आहे। ऑफिसनि में असां जेको आहे न को कमकार जेके ऑफिशियल्स जेके रिलेशन्स हूंदा आहिनि, PR हूंदा आहिनि, त उन सां ॻाल्हाइण जो तरीक़ो अलॻि हूंदो आहे। इहे सभु असांजी ज़िंदगीअ जूं ज़रूरतूं आहिनि। सभ खां वधीक जेको ॿियो पहलू आहे त असां चाहियूं था त असांजा ॿार उहे शयूं सिखनि जेके उन्हनि जा वालिदेन न सिखी चुका आहिनि, उन्हनि दौर खां न गुज़रनि, ॾुखिये दौर खां न गुज़रनि जेके उन्हनि जा वालिद साहब या उन्हनि जा पेरेंट्स गुज़री विया आहिनि। त दोस्तों, मुंहिंजो चैनल इन्हनि शयुनि खे काफ़ी रहनुमाई कंदो ऐं हिकु स्ट्रीम लाइन ऐं हिकु कंप्लीट कोर्सिस खे डिज़ाइन पियो करे त जीअं तव्हां उनखे सीक्वेंस में ॾिसी सघो। ही रैंडम वीडियोज़ न आहिनि, ही सीक्वेंस वीडियो आहिनि जेका हर लेसन सां कनेक्टेड आहे। जिन दोस्तनि अञा ताईं हिन चैनल खे सब्सक्राइब न आहे कयो, सब्सक्राइब करणु ऐं वीडियो खे एंड ताईं ज़रूरु ॾिसणु ऐं वधीक जेको आहे मज़ीद वीडियोज़ जे लाइ बेल आइकन खे नोटिफिकेशन्स जे लाइ ज़रूरु प्रेस कंदा। त दोस्तों, अॼु असां हिन वीडियो में जीअं असां पहिरीं वीडियोज़ में नॉर्मल ग्रीटिंग्स, सेंटेंस जुमलनि खे ऐं उनखे असां एटिक्वेट्स जे बारे में सिखियोसीं, अॼु असां सिखंदासीं ग्रीटिंग्स जेका आहिनि। जीअं त ग्रीटिंग्स informal and formal greetings हूंदियूं आहिनि, غیررسمی and رسمی greetings. Okay. So today we're going to talk, in this video we're going to talk about the informal greetings. Okay. As I mentioned, the accent, the way of your talking, okay, it depends on you. It's not compulsory that you have to adopt, any native speakers. Okay. The main thing is that you have to pronounce correctly and you have to deliver the message correctly. That's the language simple. Okay. If you want to adopt an accent, okay, that's really good. Okay, that's gonna shape your body, that's gonna shape your language, that's gonna shape your personality. Okay, I really appreciate. Okay, that one. तो दोस्तों, हिन वीडियो में असां लेसन में पार्ट 6 में इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स जे बारे में सिखंदासीं। त ॾिसूं इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हूंदियूं कहिड़ियूं आहिनि। अचो त ॾिसूं, मां कुझु उन्हनि जा मिसाल जेको आहिनि तव्हांजे साम्हूं ईंदसि। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स: गैररस्मी सलाम दुआ, अनऑफिशियल सलाम दुआ, कैजुअल सलाम दुआ, जेका असांजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी जी प्रैक्टिस हूंदी आहे। असां कंहिं दोस्त सां, कंहिं रिलेटिव सां, कंहिं नेबर सां, कंहिंसां बि मिलूं था त असां इनफॉर्मल हूंदा आहियूं। पर सभ खां इम्पॉर्टेंट शइ इहा आहे त कोशिशि करे असां जेॾीमहिल कंहिंसां ग्रीट कयूं ऐं हू अंडरस्टैंड करे थो कुझु अंग्रेज़ी, त बहितर आहे त असां पंहिंजी ॿोली में इंग्लिश जा वर्ड्स इस्तेमालु करियूं। फ़ाइदो छा आहे? इहा हैबिट तव्हांजे ॿारनि में इंस्टिल थींदी, जेका आहिस्ते आहिस्ते वधंदी वेंदी हली। तव्हां सां माण्हू मुतासिर थींदा, माण्हू तव्हांखे अट्रैक्ट कंदा ऐं तव्हां आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज जी तरफ़ ऑटोमेटिकली अचणु शुरू थी वेंदा हुआ। त पंहिंजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में कॉमन इंग्लिश वर्ड्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सां ज़रूरु इस्तेमालु कंदा। अॼु मां तव्हांखे कुझु इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स जेका तव्हां स्क्रीन ते ॾिसी सघो था,
जेके मां सिंधी में भी ऐं उन में कयो आहे इंग्लिश में भी, and I'll be trying to transliterate into Urdu as well as So the first one is WhatsApp, and how's it going? How are things? What's happening? What's going on? I do believe that these are the common questions we mostly face and we mostly want to ask our friends or the neighbors when we greet, okay? And I really also believe that usually more than 3 times we speak or we ask these questions, okay? A normal or average person, okay, this is at least 1 or 2 sentences we speak, okay? This is now तव्हां सम्झी सघो था त इहे जेकॾहिं लफ़्ज़ असां फ्रेज़िस जेके ॾींहं में 2-3 चकर सां इस्तेमालु करियूं था त मतिलबु उनजी केॾी इम्पोर्टेंस हूंदी आहे त पोइ बहितर आहे त असां उनखे सिखूं सम्झूं ऐं छो न उन सां सही तरीक़े सां ॻाल्हायूं जेके असां हीअ प्रैक्टिस पंहिंजे ॿारनि सां बि करियूं त हू मजबूर थियनि उनखे रिप्लाई करण जे लाइ असां तेसिताईं उन शइ ते न पहुचंदासीं जेसिताईं असांजी उहा प्रैक्टिस में न हूंदी आहे So these are the words, common questions we mostly seek for, we mostly ask for, and try to expect answer in English, especially from your children as well as whom you are expecting that he can respond very well, okay? तो दोस्तों ये कॉमन लफ्ज़ हैं जो फ्रेजेस हैं जो हम गैररसमी उसमें इस्तेमाल करते हैं ज़बान में कोशिश करके अपने बच्चों के साथ ये यूज़ करें और उनसे पूछें और उनको सिखाएं कि उनको जवाब कैसे दिया जा सकता है आप सिंधी में पढ़ भी सकते हैं ये और अगर नहीं तो इंग्लिश में बहुत ही ईज़ी है सिंधी में दोस्त जेके आहिनि उहे इन जी ट्रांसलेशन ॾिसी बि सघंदा त उहो लिखियलु आहे या पढ़ी बि सघंदा छा थी रहियो आहे कीअं हली रहियो आहे कीअं शयूं आहिनि दिस इज़ सिंपल गूगल ट्रांसलेशन इट्स नॉट रॉकेट साइंस ओके छा थी रहियो आहे एंड छा थी रहियो आहे सो लेट्स गो एंड आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई एम श्योर you will like it, okay, and try to use these into your daily language, especially with your children. So have a look on these first. I have responded, replied. The replied answer is in the black. However, the highlighted, okay, that is the question. So what's up? Nothing special. Just killing time. There can be several answers, okay. इनके तमाम घना आंसर्स थी सघनि था बहुत सारे आंसर्स इसके हो सकते हैं nothing just sitting nothing just playing the game nothing watching television so multiple answers okay for this question so how is it going it means how are you तुम कियां आयो आप कैसे हैं fine thank you and you this is very the casual, okay? It's an informal, okay? So if it is informal, okay, I'll be telling you now. Upcoming lesson. Good. Fine. Thank you. And you? How are things? Reply. Good. How about you? What about you? So at the same time, you are asking the question, okay? So you are telling, I'm good, okay, fine. And तव्हां कीअं आहियो? आऊं ठीकु आहियां. तव्हां ॿुधायो? आऊं भी ठीक है. So, how are the things? Good. How about you? तव्हां ॿुधायो? आप सुनाए. Another one. What's happening? क्या हो रहा है? छा थी रहियो है? Not much. Not much means कुछ खास ना. कुछ खास नहीं. Nothing special. Not much. What about you? Means in these days, okay, what's happening like that, okay, not at the same moment, okay. At the same time, you are asking question, what about you, okay. So what about you means you are asking that, tum sunao, aap sunao, kaise ho raha aapka kuch. No, same to me. Not special, okay, not much, nothing special, okay. That's it. What's going on? Just doing homework, just watching television. Just playing with the pets. Just taking sun bath.
whatever you are doing at that moment, okay, or that's you can mention in your discussion, okay. तो दोस्तों ये हुआ कुछ वर्ड्स जेके तमामु ज़रूरी आहिनि ऐं कोशिशि कयो त पंहिंजनि ॿारनि सां कम्युनिकेट कयो त जीअं इन फ्यूचर उहे इन्हनि शयुनि खां जेको आहे न फैमिलियर थियनि. It's not about, okay, to instill or feed these words, okay. A language is all about the practice, okay. So don't try to memorize, okay. Try to practice. Practice is the best, okay, and which will give you more reliability, which will give you the more what we call confirmation, which will give you the more confidence and knowledge what exactly you are doing about that, okay. So this is really the things, okay, you are going to do, and I really appreciate, okay, for your subscriptions and your comments, okay, in this one. I'll be expecting more subscriptions from those who didn't subscribe this teaching and learning channel. If you have any suggestion and comments, okay, please share it with me, okay. And I will also suggest the newcomers that don't forget to subscribe the teaching and learning. We'll be meeting with a new and another topic, which will be the formal greetings, okay. So till that, bye, and I hope that you enjoyed this lesson. Stay blessed, stay safe. Thank you so much.